वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम इंडियन पॉलिटी डिस्कशन करवा जहाँकि अपकमिंग एग्जाम हेल्पफुल हो। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ओडिशा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल हो। आपण मैंने जदि ओडिशार जेकोसी एग्जाम प्रिपरेशन करुच ताल वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल आपन को बहुत ही हेल्पफुल हो। ता सहित लाइक एंड शेयर कर दियंतु। आज फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following exercise the most profound influence in forming the Indian Constitution? यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए representative and popular element in the governments of India was made through, यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, which of the following acts introduce communal electorate in India? यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्लियर। ताले नेक्स्ट नंबर जीवा। नेक्स्ट नंबर, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डार्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, द instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950. यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी, एमरजेंसी प्रोविजन्स। क्लियर। ताले नेक्स्ट नंबर जीवा। नेक्स्ट नंबर, the Government of India Act 1935 was based, यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, द मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड बाय द, यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। क्लियर। ताले नेक्स्ट नंबर जीवा। नेक्स्ट नंबर, द फर्स्ट डिफाइंड स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय, यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, the Montagu-Chelmsford report formed the basic of, यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट नंबर, through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put a end? यार सठिक आंसर है ऑप्शन सी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, which of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over the government of India? यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। नेक्स्ट नंबर, डेर्ची वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर, यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स। क्लियर।
Next number, which of the following was where the main feature of the Government of India Act 1919 यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी है 1 2 3 मध्य 2 and 3 क्लियर ऑप्शन डी है 2 and 3 devolution of legislative authority by the center, expansion and reconstitution of central and provision legislature clear option D have a correct answer. Next number, in the federation under the act of 1935 residuary powers were given to a सटीक आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल क्लियर ताले नेक्स्ट नंबर जीवा नेक्स्ट नंबर द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड bicameral for the first time a सटीक आंसर है ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियर ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर. Next number, which of the following is correct? A सटीक आंसर है ऑप्शन ए द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Clear option A have a correct answer. Next number, which of the following acts was described by Jawaharlal Nehru Charter of Slavery? A सटीक आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर, इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यार सटीक आंसर है ऑप्शन सी 1950. नेक्स्ट नंबर, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टरी एट द सेंटर? यार सटीक आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर, व्हिच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट प्लान? यार सटीक आंसर है ऑप्शन डी जॉन सिमन क्लियर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर. ताले नेक्स्ट नंबर जीवा नेक्स्ट नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यार सटीक आंसर है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट नंबर, the Constitution of India come into force option C है January 26 1950 clear option C है correct answer. ताले next number जीवा next number, the Supreme Court of India was set up by the सटीक आंसर है option A regulating act 1773. Next number, the distribution of power between the center and the state in the Indian Constitution are based on the scheme provided in the option C have a correct answer Government of India Act 1935 option C clear. ताले next number जीवा next number, which of the following are the principal feature of the Government of India Act 1919 यार सटीक आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 clear introduction of diarchy in the executive government of the provisions, introduction of separate
communals electorate for Muslim, development of legislative authority by the center to the provisions. Correct answer have 1 and 3. Clear? Option C have correct answer. তাহলে next number ଯିବା. Next number, who was the chairman of the Union Power Committee of Constituent Assembly of India? Yes, so the answer have option D, Jawaharlal Nehru. Next number, what was the basic for constituting the Constituent Assembly of India? Yes, so the answer have option B, the Cabinet Mission Plan 1946. Clear? তাহলে next number ଯିବା. Next number, the Constitution of India was adopted on, so the answer of option C, 26 November 1949. Next number, who presided over the first meeting of the Indian Constituent Assembly? So the answer of option B, Sachidanand Sinha. Clear? তাহলে next number ଯିବା. Next number, who among the following was the advisor to the drafting committee of Constituent Assembly? So the answer of option D, B.N. Rao. Next number, the Constituent Assembly of the Constituent Assembly of India started functioning from, option A have a correct answer, 9th December 1946. Clear? তাহলে next number ଯିବା. Next number, who among the following was not a member of the Constituent Assembly? So the answer of option C, Jayaprakash Narayan. Next number, the Constitution of India was completed on, so the answer of option B, November 26, 1949. Next number, how many seasons of the Indian Constitution Assembly were conducted for the formulation of India Constitution? Option B have 11. Next number, the first session of Indian Constitution Assembly was chaired by, so the answer have option D, Dr. Sachidanand Sinha. তাহলে next number ଯିବା. Next number, how much time the Constituent Assembly took the frame of Constitution of India? How much time the Constituent Assembly took the frame the Constitution of India? So the answer of option B, 2 years 11 months 18 days. Clear? তাহলে next number ଯିବା. Next number, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. So the answer of option D, 29 August 1947. Next number, who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? So the answer of option D, Sardar Patel. Next number, the members included in the Constitution Drafting Committee, option A have 7. Clear? Next number, the first session of the Constitutional Assembly was held, so the answer have option B, December 9, 1946. Next number, who proposed the
preamble before the drafting committee of the constitution? এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন এ জওয়াহরলাল নেহরু। Next number, who was the president of the Constitution Assembly of Independent India? এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন বি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। ক্লিয়ার?